ओके ओके, नेक्स्ट इज एक टर्म आता है, बहुत सारे टर्म है, उसको फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसी का अपोजिट जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म, दिस इज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू कल्चर, सेंट्रिज्म, जेनोसेंट्रिज्म, राइट। मतलब अभी आपने क्या देखा, आपने लाइकेडनेस, ओवर लाइकेडनेस और ऑब्सेशन फॉर योर ओन कल्चर, that is ethnocentrism, and opposite to it obsession for others culture, that is genocentrism. genocentrism कनाडा चले जाएंगे या यस ना, orientation towards America, American dreams, isn't it? Canada, yeah, UK, right? So that is genocentric orientation, जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, यस ना। उसी का एक वेरिएबल है जो हमारे सिलेबस में भी हैव टू डिस्कस इन आवर सिलेबस, वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, isn't it? Right, one variable of genocentrism, isn't it? Like, do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is Sociology. They both decided to join Vikash Ranjan sir's Sociology optional program and prepared the mains examination in Sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC Civil Service examination. Vikash sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan sir guidance and teaching for preparation of Sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for Sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for Sociology optional, essay, ethics and CSAT. during British period, under British rule, Indians were westernized, adopted to English language, Western lifestyle, education, yes or no? Culture, transportation, ये सब क्या है हमारे यहाँ? वेस्टर्न ही है ना? मोटर कार या रेलवेज, एयरवेज, ये सब क्या है? वेस्टर्न है ना? राइट? सो वेस्टर्नाइजेशन इज वन वेरिएबल ऑफ हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इज इट राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड एज डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी, यस ना? 5 ईयर प्लान इकोनॉमी पढ़ा है आपने? So industrialization was adopted as development strategy. Heavy industries were set up. That was Western model. Yes or no? Right. Different from Gandhian model of rural development. Yes na? So that is also genocentric orientation. Right. अब इसके भी फंक्शन एंड डिसफंक्शन है, ब्रीफ कर दूंगा उसको, है ना? क्योंकि कल्चरल लैग अगर पूछा गया है ना, तो हो सकता है शॉर्ट आंसर में एथनोसेंट्रिज्म या जेनोसेंट्रिज्म भी शॉर्ट आंसर में पूछ दे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में यू विल कंप्लीट दिस. या जैसे स्मार्ट सिटी कैसा ओरिएंटेशन है? ऑल ज्वाइंट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज, दे went to France, studied that model 5 months 6 months में they came, फिर यहाँ स्मार्ट सिटी, getting your point. तो दिस इज जेनोसेंट्रिज्म इन पॉलिसी मेकिंग, जेनोसेंट्रिज्म इन पॉलिसी मेकिंग, राइट? और आपको लगता है कि अनटिल अनलेस विलेजेज आर स्मार्ट सिटी का डिफिकल्ट है स्मार्ट होना? यस और नो? वी नीड अ स्मार्ट विलेज along with a smart cities, otherwise yes ना? बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी टू दिल्ली टू कोलकाता टू चेन्नई टू, है ना? गेटिंग अ पॉइंट. अगर विलेजेस नहीं होगा स्मार्ट तो लोग तो माइग्रेट करते रहेंगे ना, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग टुडे. या माइग्रेशन ऑफ पीपल, यस ना? यस. एनीवेज, खैर आप जाएंगे पॉलिसी बनाने तो ये सब आपको हेल्प करेगा, है ना? कि यू विल हैव टू बी सेंसिटिव टू लोकल कंडीशन इन पॉलिसी मेकिंग, यस ना? राइट.
Okay, genocentrism. I hope you understood, yeah? Yes, example में लिख लेना, discussed in class. Yes, westernization, also genocentric orientation. Yes, okay. हाँ. Function of genocentrism is that it brings change. Don't you think westernization has led to changes? Yes, na? अरे modern education, English education, railways, है ना? Healthcare system, bureaucracy, police, modern police, army, these are all, yes, na? Qualitative change. So this is function. This has led to change, isn't it? But genocentrism also dysfunctional in terms of loss of folk culture, local culture, है ना? जो folk culture है उसका loss. English education में many tribal languages lost, dialects lost. Yes ना? Right. So this is right. Okay. तो function भी है, dysfunction भी है. जो भी होता है ना, आगे we will discuss perspective, functionalist perspective and criticism dysfunctions, isn't it? तो सोसाइटी में अपने को साइंटिस्ट के जैसे समझ लेना है कि this is something, what it is, what are its functional consequences, what are its dysfunctional. Yes ना? So this is.